अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पिछले दो वीडियोज़ में हमने डिस्कस किए थे सॉलिड स्टेट एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, लिक्विड स्टेट एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड स्टेट्स। सो रीज़न यही है, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्यों डिफरेंट हैं। रीज़न यही है कि जो पैकिंग है इनमें वो डिफरेंट हैं। In solids, particles are closely packed, hence their interparticle forces is stronger. In liquids, they are not closely packed. Particles are not closely packed. It means interparticle distance is somewhat larger than in solids, and hence weak interparticle forces between the particles. Interparticle forces. Now, third is the gas. Third state of matter is the gas, or it is called gaseous state. Gaseous state. In what is the best definition जो हमने पढ़ा था solid and liquids? Solid is a form of matter which possesses rigidity. Is incompressible, is highly incompressible, and has definite shape and definite volume. However, liquid is that form of matter जो हमने पढ़ा था which possesses fluidity. Fluidity is almost incompressible and has जो हमने पढ़ा था and is it is almost incompressible and has a definite volume but no definite shape. हमने पढ़ा था no definite shape. Liquids take the shape of the container in which they are placed. It is the ये definition हो गई in liquid and solids की. अब gas है third option, जो third state or third form of matter, that is gas. Gas is that state of matter which possesses fluidity. Gases are fluids and is highly compressible. Gas is highly compressible. And gas has neither a definite shape, no definite shape, neither definite shape and nor definite volume. So what is the definition of the gas? Gas is defined as the form of matter which possesses fluidity and is highly compressible and has neither definite shape nor definite volume. It is that state of matter which possesses fluidity and is highly compressible and hence has neither a definite shape or nor definite volume. This is the definition of gas. Now we will discuss the properties of gases or gaseous state. So salt के बारे में हमने पढ़ा था. Solid has definite shape and definite volume and distinctive boundaries, whereas liquids have definite volume but not definite shape. They take the shape of the container. Similarly, gases take the shape of the container in which they are placed. Gases have neither definite shape nor definite volume. This is the first properties of gas. So what is gases neither have a definite shape nor definite volume. So gases have no definite shape. Again, जो interparticle distance, they are particles are widely separated. They are very large. They are at a very large distance from each other. Very large distance from each other in the particles which make up the gas. So gases do not have definite shape. They take up the shape of the container. अगर different container लेंगे हम, they take the shape of the container in which they are placed. Likewise, gases do not have definite volume. For example, हम कर लेंगे if a gas is transferred from a smaller vessel to, suppose smaller vessel लेंगे हम
2 किलोग्राम सिलेंडर लेंगे, 2 किलोग्राम सिलेंडर ऑफ गैस फिल्ड है, उसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं 15 किलोग्राम ऑफ गैस, किलोग्राम सिलेंडर ऑफ गैस में। सो ये इसमें भी जा सकता है और पूरा फिल होगा ये, ठीक। यानी इट फिल्स द बिगर वेसल एज वेल व्हेन, अगर हम छोटे वेसल में हम गैस है ट्रांसफ़र करेंगे बिगर वेसल में, ये इट आल्सो fills the bigger vessel. In other words, we can say volume of gas is equal to the volume of the container. Volume of the gas is equal to the volume of the container. Volume of gas is equal to volume of container. Important point है। gases do not have different shape. अगर हम लेंगे बैलून, एक लेंगे राउंड टाइप बैलून जो अवेलेबल होता है, और एक लेंगे सिलेंड्रिकल जो शेप है बैलून, अगर इनमें उनको हम इन्फ्लेट करेंगे, इट बिकम्स राउंड, इट बिकम सिलेंड्रिकल। सो दोनों में हम एयर भरेंगे, सो इट इज़ राउंड, सो इट टेक्स द शेप ऑफ द दिस round shaped, and cylindrical it takes the shape of cylinder. So इन वो अगर दोनों में हम एयर भरते हैं, जो इसका शेप है वही ये क्या केयर करेगा गैस, इसका शेप सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल है, यही केयर करेगा सिलेंड्रिकल शेप। तो गैसेस, इसका मतलब ये है कि गैसेस डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर। ये हो गया फर्स्ट प्रॉपर्टी, गैसेस neither have definite shape nor definite volume. Second property is this gases have maximum fluidity. Gases are fluids, they have a tendency to flow, and gases have greater freedom of motion than liquids and solids, and gases are less rigid, very least rigidity, they show least rigidity. Again, what is the reason behind this? They show maximum fluidity is that it is their large interparticle spaces or distances, large interparticle distances and spaces, and hence weak interparticle force of attraction. Interparticle force of attraction, gases have high fluidity, they flow easily and more faster, and less rigidity, they are less rigid. Again, reason is large interparticle distances and weak forces of attraction. So second property, gases have maximum fluidity and least rigidity. थर्ड प्रॉपर्टी इज़ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज़ जो हमने पढ़ा था, सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, लिक्विड्स आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, एंड गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल. Again, reason is large interparticle distances. So and the gaseous state, they can be decreased by applying pressure. These distances can be decreased by applying pressure. अगर pressure squeeze करेंगे इसको the distance becomes somewhat closer, and hence the distance becomes somewhat less, and hence we can say that gases are compressible. इसके लिए हम एक जो ये है, जो हमने एक्सपेरिमेंट करेंगे, क्योंकि गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, इट इज़ ड्यू टू दिस कंप्रेसिबिलिटी, जो लार्ज वॉल्यूम जो हमने पढ़ा था, लार्ज वॉल्यूम ऑफ जो गैस हैं उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, और स्मॉलर जो सिलेंडर में हम उनको क्या कर सकते हैं, जो हम क्या कर सकते हैं, स्मॉलर सिलेंडर में हम इसको क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, और गैस को हम इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं इन द सिलेंडर जो हम यूज़ करते हैं। एलपीजी को, LPG is a liquefied petroleum gas, is the full form of LPG is liquefied petroleum gas, which we use in our homes for cooking, and also जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं जो हॉस्पिटल्स में होते हैं या हॉस्पिटल्स को सप्लाई करते हैं, आज जो उनका ज़्यादा यूज़ होता है कोविड पेशेंट्स के लिए, जिनकी सब सेचुरेशन डाउन होती है, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है. So oxygen is transported in cylinders, large oxygen
a greater volume of oxygen is transported, is stored in these cylinders and transported from one place from transported to hospitals. So actually this gas is compressed in the cylinders. To show हम शो भी कर सकते हैं ये gases are highly compressible while solids are incompressible and liquids are almost incompressible. ये इसको हम शो भी कर सकते हैं एक्टिविटी से. एक्टिविटी क्या है, हम डिफरेंट लेंगे सिरिंजेस लेंगे. सपोज दीज आर सिरिंजेस, हम 50 ml लेंगे या 200 ml लेंगे या 100 ml लेंगे, हम 3 लेंगे. Let us take 3 these syringes, suppose 200 ml 200 ml 200 ml. These are the 3 syringes. ठीक, इनका जो पिस्टन है, यहाँ पिस्टन है, यहाँ इनका पिस्टन लगा है. ठीक, this is again the piston. पहले हम पिस्टन जो है, हम पिस्टन एक एक करके इनको रिमूव करेंगे. ठीक, इसका भी रिमूव करेंगे, इसका भी रिमूव करेंगे, इसका भी रिमूव करेंगे. ठीक, जो पहला है, पहला वाला, फर्स्ट वाला, सेकंड, थर्ड. पहला वाला जो है, पहले हम करेंगे इसका नोज़ल जो है इसको हम रबर से बंद करेंगे, रबर कैप लगाएंगे हम. ठीक, इसको बंद करेंगे. ठीक, पहले इसका जो हमने जो पिस्टन है निकालेंगे, बाद में जो नोज़ल है उनको इसको बंद करेंगे, स्टॉप करेंगे. जो फर्स्ट वाला है इसको एज इट जो है इसको हम ऐसे ही रखेंगे, यानी इट इज़, हम एम्प्टी बोलेंगे. इसमें कोई सब्सटेंस, हालांकि इसमें एयर होता है, इट इज़ नॉट एम्प्टी. सो हम ऐसे ही रखेंगे इसको, इसमें कुछ नहीं डालेंगे, इसमें एयर खुद ही जाएगा. ठीक, इसमें हम वाटर डालेंगे. लेट अस टेक इसको वाटर, इसमें वाटर भरेंगे हम. इसमें हम भरेंगे, सपोज सैंड लेंगे, हम मिट्टी लेंगे या सैंड लेंगे, इसमें सैंड और सैंड लेंगे, सैंड पार्टिकल्स, सैंड. इसमें हम लेंगे वाटर, इट इज़ फिल्ड विद एयर. एम्प्टी यानी एयर इसमें है तो गैस. ठीक, फिर हम इसको पिस्टन तीनों पिस्टन लगाएंगे. जो ये हैं इसको हम जब कंप्रेस करेंगे, ये कंप्रेस होगा लाइक दिस, ये यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक आएगा. ये इट मीन्स दैट यहाँ से यहाँ तक कंप्रेस होगा. ये दिस मीन्स दैट गैसेस आर कंप्रेसिबल. इसको हम जब पिस्टन इसमें डालेंगे, फिर कंप्रेस करेंगे. जो वाटर लेवल है, वाटर लेवल स्लाइटली कम होगी. वाटर लेवल यानी इसको जो पिस्टन है, पिस्टन स्लाइटली यहाँ होगा, प्रेस करेंगे, यहाँ से यहाँ गया है, इट मीन्स दैट इट इज़ ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल. इसको जो है इसका जो लेवल है, जब पिस्टन हम इसमें भरेंगे, पुश करेंगे, इसके लेवल, इसको जो लेवल है ऐसे ही रहेगी. इट मीन्स दैट सो दैट इज़ इनकम्प्रेसिबल. लिक्विड इज़ ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल एंड जो गैसेस हैं दे आर हाईली कंप्रेसिबल. ठीक, जो लिक्विड वाला जो सिरिंज है, पिस्टन है, वो क्या होगा, स्लाइटली मूव होगा ऑन अप्लाइंग प्रेशर. इट मीन्स द लिक्विड्स आर slightly compressible, while the solids are not compressible, यानी they are incompressible. So, these are highly compressible. These are some properties of liquid state. जो remaining हैं उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे. ठीक, थैंक्स.